Good morning, everyone. How are you? Hope everybody is fine there. Okay. Today, what we are going to learn like how to make friends, means how to ask people certain questions, okay? And basically, stress will be on the words do you, don't you. दोनों का अगर हम if we use, see, say if I'll say, do you go to school? ठीक है ना, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या तुम स्कूल जाते हो? ठीक है. इन अदर वर्ड्स आई विल आस्क यू, डोंट यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग तो सेम है, सो आंसर विल बी द सेम. ठीक है. सो वी विल डू प्रैक्टिस फॉर दिस. ठीक है. अगेन फॉर डज ऑल्सो एंड डजंट ऑल्सो. ठीक है. लाइक डज शी गो टू स्कूल, सेम क्वेश्चन है. अनदर वे आई विल आस्क यू, डजंट शी गो टू स्कूल? ठीक है. Okay, so it will be like that. We will again practice for some other question words also. Where, what, who. ठीक है. चलो, let's first watch the video. ठीक है, then we will talk. Okay. Welcome to the learning activity, Making Friends. This activity covers asking questions beginning with what, when, why, who, where, and which. Asking questions using forms of the word do and answering with yes and no. Making simple statements about your daily routine using at, half past, quarter past, and quarter to for talking about time. We all like to have friends. But how do we make friends? One way is to tell others about yourself and get to know them. You can begin by greeting others and introducing yourself. For example, "Hi, I'm Abhay." Then you can ask them about themselves. For example, "What's your name?" You can carry the conversation further by telling them more about yourself and asking more questions. For example, "I am a student. I am from Delhi. Where are you from? What do you do?" Listen to this conversation between Jay and Zoro. Observe the words they use to tell each other about themselves and the words they use to ask questions. We've learnt that we can use the words what, where, and who to ask questions to get to know people. Let's learn some more words that we can use to ask questions. We can use when to ask questions about time. For example, when will you come back? We can use which to ask questions about things or places. For example, which college do you go to? Note that we do not use which with people. We can use why to ask questions about actions. For example, why are you late? Let's learn how we use do, don't, does, and doesn't for asking questions about things and actions. We can use do and don't to ask questions. For example, do you want an umbrella? Or don't you want an umbrella? Note that both questions have the same meaning. Similarly, we can use does and doesn't to ask questions. For example, does she go to school? Or doesn't she go to school? These questions can be answered with yes or no. For example, do you want an umbrella? Yes, I do. Doesn't she go to school? No, she doesn't. Now, let's learn some words we can use to talk about our daily routine and about ways of expressing the time at which we perform various activities. For example, you may get up at 8 o'clock in the morning and have breakfast at 8:15. You may leave for college at 10:30. You may have lunch at 1 and return home at 4:45. Note that we used at whenever we talked about time. For example, you get up at 8 o'clock. There are different ways in which you can express time. Let's look at the words we can use to tell the time. Quarter past. This means 15 minutes past the present hour. So if you have breakfast at 8:15, you would say breakfast is at 8:15. Quarter to. This means 15 minutes before the next hour. For example, if you return from college at 4:45, you would say you return at 4:45.
half past. This means 30 minutes past the present hour. So if you leave for college at 10:30, you would say you leave at 10:30. Let's listen to Lava describe her lazy brother's routine. Observe the words she uses to talk about time. Let's sum up what we have learned so far. In this learning activity we learned asking questions beginning with what, when, why, who, where, and which. Who are you? What's your name? Where you're from? Which college do you go to? When did you come? Why are you late? Asking questions using do, don't, does, and doesn't, and answering with yes and no. Do you go to college? Don't you go to college? Does she go to college? Doesn't she go to college? Making simple statements about your daily routine. I get up at 8 o'clock. I have breakfast at 8:15. I go to college at 10:30. I return home at 4:45. Congratulations! You have completed the learning activity, making friends. So children, you watched this video? Okay? Now what we are going to do now, we are going to practice more for do you and don't you. Okay? I'm again showing you some activity. We will practice it. ठीक है कि do you and don't you को हम कैसे use करेंगे. Clear है? Okay. I am again taking you to some other activity. Just listen it properly. Okay, here it is. So it's a conversation. ठीक है? It's a conversation between an interviewer and a candidate. ठीक है? Now we will understand कि उनके बीच में conversation कैसे चल रहा है and how they are using these words. ठीक है? Like do you and don't you का कैसे use हो रहा है. Okay बेटा? Okay. Okay, let's see. So what interviewer is asking here? First of all, greeting is done. ठीक है? So whenever we meet someone, so we say good morning, है ना? Good afternoon. Afternoon का time है तो we will say good afternoon. And if it is evening, so we will say good evening. So first of all, interviewer asks, he speaks first. ठीक है? What he says? Good morning. Candidate also replies, good morning, sir. Now, here question starts. Interviewer is asking, are you ready for the interview? ठीक है? Candidate is saying, yes, sir, I am ready. ठीक है? अभी just see in this line, interviewer जो is asking, what is he asking? Do you like reading books? ठीक है? Means he is asking क्या आपको books को read करना पसंद है? Reading books आपको पसंद है? Right? So वो different way में भी इसको question को पूछ सकता था कि don't you like reading books? Yes? ठीक है? Now the answer from candidate side is I don't like reading books but I like to read the newspaper. Now again interviewer asks, do you like traveling? क्या आपको traveling पसंद है? मे बी कुछ ऐसा जॉब होगा कि जहाँ पर ट्रैवल भी करना होगा. सो इज आस्किंग. ठीक है? कैंडिडेट सेज यस सर आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट. मुझे बहुत ट्रैवलिंग मुझे जो है करना पसंद है. अ लॉट मीन्स बहुत पसंद है. यस. नाउ इंटरव्यूअर आस्क डू यू वांट टी और कॉफी? ठीक है? ही इज आस्किंग, ही इज ऑफरिंग टी और कॉफी टू दैट कैंडिडेट एंड ही इज सेइंग कि डू यू वांट टी और कॉफी? क्या तुमको चाय और कॉफी चाहिए? ठीक है? सो ही मे इवन आस्क लाइक दैट, डोंट यू वांट टी और कॉफी? क्या तुम्हें चाय और कॉफी नहीं चाहिए? मीन्स अगेन ही इज आस्किंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वे. ठीक है? नाउ कैंडिडेट आंसर्स नो थैंक यू. ठीक है? नाउ इंटरव्यूअर सेज डोंट यू वांट एनीथिंग टू ड्रिंक? कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए ड्रिंक करने के लिए? मीन्स ड्रिंक मीन्स water, tea, coffee, anything, any beverage. ठीक है? Now candidate says, no sir, thank you. I will ask you if I need anything. ठीक है? Right? Now some hints are also given here. Do you read the newspaper? Because again practice is given here. Don't you carry an umbrella?
क्या तुम अपने साथ अम्ब्रेला कैरी नहीं करते हो? सो वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रैक्टिस्ड हियर, डू यू एंड डोंट यू। ठीक है, मतलब हम अपने आप ही कई बार लाइक वी विल मेक आउट कि हमें कहाँ पर डोंट यू यूज करना है एंड डू यू यूज। ओके, चलो चिल्ड्रन, लेट्स डू सम अदर एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फॉर द वर्ड्स व्हाट एंड वेयर। ठीक है, now you will hear an audio. Okay, so in that audio you are going to hear conversation between Jay and the alien. ठीक है, कोई alien है, means it's something imaginative type thing. ठीक है, so Jay spots an alien in his backyard. ठीक है, now you are going to hear it. ठीक है, and then on the basis of this audio we are going to frame these questions here. ठीक है, as I told you कि हमको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, where की and what की। ठीक है, so what is coming, okay, in two places what is coming, so we are going to practice for where and what। ठीक है, just hear the audio। ठीक है, Hey, who are you? And what brings you here? Hello, my name is Zorro. I'm here to find my flying saucer. Hi, I'm Jay. So, Zorro, where are you from? I'm from a planet called Nu. Have you heard of it? It's in the Andromeda galaxy. I'm here on Earth with my friends, but now I am lost and I can't find my friends. Oh, poor Zorro. Come, sit here on this bench with me. I miss Nu, and I miss my friends. What do you and your friends do on Nu? Well, we play all day and we study all night. Cool, that's neat. Where do you study? At the new Nu Space Center. Really? That sounds interesting. And what do you study? Oh, space engineering and rocket science. What about you, Jay? What do you study? I study. Oh, look, Zorro. Is that your flying saucer? Yes, yes, it is. Bye. I've got to go now. Bye, Zorro. Come back sometime. चलो चिल्ड्रन, अभी आपने ऑडियो सुना। ठीक है, now we will do these exercises। ठीक है, now again imagine that you meet Zorro। ठीक है, and ask him some questions, his answers are given below। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है, आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज आंसर्स यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस। ठीक है, but the questions are okay incomplete, only one word is there, right? So you will complete these questions। ठीक है, now the first question question word is where, और उसका आंसर क्या है? It is I am from planet GNU। ठीक है, जोरो का आंसर क्या है? I am from planet GNU। तो फिर इसका क्वेश्चन क्या होगा? अगर ही इज आंसरिंग, जोरो इज आंसरिंग, जोरो एक वो है, क्या कहते हैं, एलियन एज दे टोल्ड, तो ही इज आंसरिंग आई एम फ्रॉम प्लैनेट GNU, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन होगा वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? ठीक है, देन ओनली ही विल आंसर ना, आई एम फ्रॉम प्लैनेट GNU। ठीक है, अभी अगेन कम टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? आंसर क्या है? जस्ट सी द आंसर, इट इज GNU इज इन द एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ठीक है, कोई गैलेक्सी है एंड्रोमीडा, हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे, राइट? तो दिस जोरो इज फ्रॉम एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, नाउ ही सेइंग GNU is in the Andromeda galaxy। Now what will be the question? Question क्या पूछा होगा जय ने? वो पूछा होगा where is GNU। ठीक है ना, अभी उसको प्लैनेट बताया उसने, हमें तो ओनली 8 प्लैनेट्स के बारे में पता है, राइट? एंड दिस इज न्यू प्लैनेट, इट मीन्स इट इज फ्रॉम सम न्यू वर्ड। ठीक है, तो ही आस्क्ड वेयर इज GNU। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड वन,
एंड थर्ड में क्या आंसर है? वी प्ले ऑल डे एंड वी स्टडी ऑल नाइट। आंसर है जोरो का वी प्ले ऑल डे, हम पूरे दिन भर खेलते हैं, एंड वी स्टडी ऑल नाइट, और पूरी रात भर हम पढ़ाई करते हैं। तो फिर जय का क्वेश्चन क्या होगा इसमें? सोचो। सो इट विल बी व्हाट डू यू एंड योर फ्रेंड्स डू ऑन जेएनयू। जेएनयू में आप क्या करते हो? ठीक है ना? ओके, देन ओनली ही विल आंसर ना कि वी प्ले ऑल डे एंड वी स्टडी ऑल नाइट। Yeah? Oh. Now we will come to the fourth one. And fourth one is, जोरो का आंसर क्या है? We study at the new GNU Space Center. देखो GNU तो क्या है? वो प्लैनेट है, ठीक है। अब उसका जो आंसर है we study at the new GNU Space Center। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछा होगा जय ने कि ही इज आंसरिंग कि वी स्टडी एट द न्यू GNU स्पेस सेंटर। तो उसका क्वेश्चन होगा वेयर डू यू स्टडी, है ना? यही क्वेश्चन होगा। यस, ओके। नाउ द लास्ट वन इज देयर। जोरो का आंसर क्या है? वी स्टडी स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेट साइंस। ठीक है, तो इट मीन्स जय ने क्या पूछा होगा यहाँ पर? व्हाट करके क्या पूछा होगा? व्हाट डू यू स्टडी। ठीक है, पहले उसने पूछा वेयर डू यू स्टडी, तो उसने बताया GNU स्पेस सेंटर। ठीक है, नाउ ही आस्क्ड व्हाट डू यू स्टडी देयर। ठीक है ना, स्टडी, तो ही आंसर्ड वी स्टडी स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेट साइंस। ठीक है, चलो आपको मेमोरी में रहे, आई विल शो यू द आंसर्स आल्सो। यस, सो अभी क्या प्रैक्टिस करी हमने? डू यू, डोंट यू, ठीक है, एंड व्हाट एंड वेयर का हमने प्रैक्टिस किया। यस, ठीक है। अभी हम लोग एक क्विक लाइक चेक करेंगे कि अभी जो भी हमने लर्न किया है, हमें टू वर्ड्स का जो प्रैक्टिस किया है वो प्रॉपर्ली किया है या नहीं किया है। ठीक है, वी विल गो विथ सम अदर एक्सरसाइज एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास ओवर हियर। ठीक है, ओके। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एंड व्हाट द क्वेश्चंस आर, which of these is a correct sentence? फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा इसमें से? फर्स्ट वन इज डज इट स्नो इन विंटर। इट डू नॉट स्नोज इन विंटर्स। ठीक है, इट डजंट स्नोज इन समर्स। ठीक है, इट डू नॉट स्नोज इन समर्स। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा? देखो विंटर, समर्स के सॉरी जो सीजन्स के नेम है वो क्या क्या है? समर है, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम है। नाउ वी नेवर यूज विंटर्स, समर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सा कट हो गया? एस 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 सब कट हो गए, तो यानी कि ये सारे एस वाले कट हो गए, तो एक ही बचता है डज इट स्नो इन विंटर। सो दिस इज द करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड वन इज डैश डू वी मीट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? डू वी मीट मीन्स हम कब मिले। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है वाई विल डू वी मीट। ओके, नहीं। व्हाट डू वी मीट, सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, हुज डू वी मीट, वो भी सेंस नहीं बन रहा है। व्हेन डू वी मीट, राइट, इट इज गिविंग द सेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? व्हेन डू वी मीट, इट मीन्स हम कब मिले। क्लियर, दिस विल बी द आंसर। ओके, so children, now what you are going to do is you will frame certain questions and you will answer those questions also। ठीक है, do you and don't you के ऊपर, right, and जो दूसरा हमने प्रैक्टिस किया था what and where के ऊपर। ठीक है, so 10 questions for do you and don't you। ठीक है, does she या does he हमने वो भी किया था, मीन्स उसी का पार्ट हो जाएगा। एंड डजंट ही या फिर डजंट ही। ठीक है, तो ये डू यू, डोंट यू, डज शी, डज ही या डजंट ही और शी। ठीक है, एंड व्हाट एंड वेयर के लिए यू विल अगेन फ्रेम
10 sentences. Yes? So, this is the homework. So, अभी यहाँ पर we will wind up the class. ठीक है? We'll meet tomorrow again. Till then, bye bye.